My dear students, we have already discussed conditional clause type 0, type 1. In your book number 4, you find type number 1, type 2, type 3. There is no type 0 condition. तुम 4 नंबर बही रे देखिबो सेथिरे टाइप 0 नाही। टाइप 0 कंडीशन को बहुत ग्रामरियन माने कंडीशन भाव रे विवेचना करंती नाही। ए विषय रे मु आलोचना कर सारछि बिकॉज we see that in type 0 condition the condition and the result, the cause and the effect are always true. We have already discussed it. That is scientific truth, mathematical truth, universal truth, general truth. Example मध्ये हमें नहीं चाहती. If you pour oil on water, it floats. এটা আমি আলোচনা করছন্তি। তারপরে টাইপ 1 को আমি মধ্যে আলোচনা করছন্তি। টাইপ 1 when the result is expected to happen, not sure to happen. যদি কাহারি কিছু এই বিষয়ে সন্দেহ থাকে, you can compare type 0 and type 1. type 0 रे तार result निश्चित सब बड़े हुए, always happens. But in type 1 the result is expected to happen. Open condition से में देखो हमें को open condition, real condition. If you analyze in उड़िया वास्तव शर्त, खुला शर्त खुला रही, फलाफल आशा करा जाए, निश्चित नुहे से आम तार आलोचना करते। टाइप 1 रे वी कैन यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट इन इफ कंडीशन। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट ए विषय में आलोचना कर सकते। प्रोग्रेसिव परफेक्ट that is not the rule, but in some cases we use present progressive. If you are watching television, I will not disturb you. If you are studying your books, I will not disturb you. Present perfect. If you have seen this picture, we will watch another movie, another picture. ए विषय में आलोचना करछंती. Then imperative, if you are ill, consult a doctor. Consult a doctor if you are ill. तो से टाइप 1 रे मध्ये आ गुटे अछि, if you will give me 100 rupees, I will go to the cinema. We see that in if clause we use will. एठी मध्ये हम will व्यवहार करछंती। एपट रे will रहबा हम जानछंती। एटा मध्ये ए सब जिंस रे हम देखो, it is more a request. एटा को हम कहि परिबा request. It is a condition, but it is more a request than a condition. It is request बेसी करा जाउची, condition वाक्य होई पारे, किंतु request बेसी रहिची। जदि तुमे मते दबो, दियो नुहे दबो, जदि तुमे 100 टंका दबो, मु सिनेमा मूवी बा जिंस किनिया को जिबी बा जा किछि। तो आज हम देखिबा टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 2 जार नामकरण आमे आगुर आलोचना करछंती। टाइप 2
जहाँ आम कहते अनरियल अनरियल एंड हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल कंडीशन ताको अनरियल भी कह जाई पारे हाइपोथेटिकल भी कह जाई पारे आउ केतेक बुद्धि ताको इमेजिनरी भी कही थांती इमेजिनरी हाइपोथेसिस रु आछि हाइपोथेटिकल इमेजिन रु आछि इमेजिनरी तो ए सब केस रे हम देखू जे ए जे इमेजिनरी हम कहउछंती तो एथिरे ए जे इमेजिनरी बोली आमे भाबू घटना घटी न थाए आमे भाबू मु राजा होती जदि राजा होती तुमको मंत्री करती मु जदि चढ़ई होती मु आकाश रे उड़ती तो यही सब जिन रोचे आमर यहाँ हूँ आम ताको अनरियल बोली कहू इमेजिनरी बोली कहू तो आम टिके ताको देखिबा दिस टाइप ऑफ condition is used to express a hypothesis or unreal situation अनरियल हाइपोथेसिस बा अनरियल अवास्तव कथा कल्पनामूलक कथा भावनामूलक कथा को हम प्रकाश करते घटबार संभावना न थाए बा बहुत कम थाए न थाए कहले ही हम घटी न थाए किंतु घटबार संभावना बहुत कम थाए we can say not likely to happen unlikely you can say unlikely to happen example if I were a king I would make you my minister. Another example, if it rained, the farmers would get bumper crops. If I were a king, I would make you my minister. Let's analyze this sentence in Udia. If I were a king, मु जदि राजा हुंती मु तुमको मंत्री करती एटा होची गोटे कल्पना अनरियल सिचुएशन हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिनरी सिचुएशन इफ इट रेन्ड वर्षा जदि हुंता वर्षा हो नहीं फसल मरिबा उपरे फसल नष्ट हो जिबा उपरे तो सेठी आमे भाबुछु आमे इमेजिन करूछु गोटे हाइपोथेसिस आमे व्यवहार करूछु इफ इट रेन्ड द फार्मर्स वुड गेट बम्पर क्रॉप्स जदि वर्षा होता फार्मर्स बम्पर क्रॉप्स माने सफिशिएंट अधिक फसल पाते तो ये आम तार देखा आम ग्रामेटिकल रूल देखा स्ट्रक्चर देखा इफ क्लॉज पास्ट सिंपल you can use if clause past simple main clause would could might plus
MV modal would could might plus MV past simple if plus past simple आम आउट एग्जांपल नवा if he studied hard mindfully if he studied mindfully studied hard mindfully लिखि दबा mindfully he would get more marks जदि से पढ़ंता ताको आम ओडिया रे कहले हबो पढ़ंता पांता घटनाटी घटी नाही घटनाटा घटी नाही आमे भाबुचंती पिलाटी पढ़ापढ़ी करू नाही परीक्षा निकट ताको कह जाउची इफ ही स्टडीड माइंडफुली जदि से पढ़ंता फर्स्ट क्लास पांता अधिक नंबर रखंता दिस इज द condition that is on a real condition. Then you see we have used where if I were a king, if he were a king, this is known as subjunctive mood. तो आपको हमें कही परिबा subjunctive mood. If I were a king, I पाखरे was व्यवहार करा जाए किंतु where कंडीशनल रे हमें सब्जेक्टिव मूड रे where व्यवहार करचंती एबे was मध्ये व्यवहार करा जाई पारुची we can say if I was a king आर पटर जाउच I would make you my minister ये मध्ये ठीक क्षेत्र किसी फरक नहीं ताको हमें कहउछंती सब्जेक्टिव मूड एबे ग्रामरियन माने वाज वेयर समिति किछि ताको उभय व्यवहार पई किछि समिति किछि कोडा नियम किछि रखु नांती तो वाज मध्ये करेक्ट इफ आई वाज ए किंग आई वुड मेक यू माय मिनिस्टर वी कैन ओमिट the conjunction if ए जे हमें कहउछन if ए जे conjunction लागुची ताको हमें एठी ओमिट करि परिबा इन टाइप 2 हमें लिखिबा नाही एठी if हमें लिखिबा नाही if I were a king I would I would make you my minister. This sentence can be written were I a king. आउ जाचे से रहइबो I would make you my minister. Were I a king? एटा में if न लिखले मध्ये चलिबो एटा में I जे सब्जेक्ट I अछि I थाउ he थाउ जहा भी थाउ आमे ताको where परे लिखि परिबा where I a king ए मध्ये ठीक if I had wings another sentence if I had wings I would fly एटा मध्ये हम लिखि परिबा had I wings I would fly एटा मध्ये लिखि हबो had I wings I would fly यार किछि समिति किछि व्यवहार किछि भूल नाही हमें उभय वाक्य ए जे हमर if I were a king were I a king if I had a wings had I wings एटा किछि फरक नाही ग्रामेटिकली तार किछि फरक नाही इट इज ट्रू बोथ सेंटेंसेस आर ट्रू in case of habitual action
ये आमर ग्रामाटिकल रूल टिके चेंज हम हैबिचुअल एक्शन ये आम जाचु वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इफ आई वर ए किंग आई वुड मेक यू माय मिनिस्टर तो ये आम लगेलु पास्ट सिंपल सेपटे वुड गुड माइट हैबिचुअल एक्शन पाखे आम व्यवहार करिपरिबा इफ आई मेड ए प्रॉमिस I kept it both side past simple I made a promise I kept it एठे तार स्ट्रक्चर जेटा कि पास्ट सिंपल वुड गुड माइट व्यवहार न होई इफ आई मेड ए प्रॉमिस आई केप्ट इट जदि मो प्रतिज्ञा करूथले मु रखुतिली एटा होचे अतीतर अभ्यास मूलक पाखरे व्यवहार करि परिबा जेते बेले से लिखिया पई चाहूतले कागज कलम खोजुतले एटा जने आमे कहूचो someone who is not alive who is not present आमे ता विषय रे कहूचो तार अभ्यास विषय रे कहूचो कोन से लोकर अभ्यास विषय रे कहूचो अतीतर अभ्यास आमे उभय पटरे पास्ट सिंपल इफ आई मेड ए प्रॉमिस आई केप्ट इट आम व्यवहार करि परिबा तो एठी आमे टिके एनालिसिस करिबा टाइप 2 कहीं कि व्हाई शुड वी से इट इज इमेजिनरी आमे कहीं कि इमेजिनरी बोलते ताको आमे कहउछंती तार व्यवहारटा कोन रियलिटी बा रियल सिचुएशन रियल सिचुएशन कौन आई हैव नो विंग्स आई हैव नो विंग्स आई कांट फ्लाई आई हैव नो विंग्स आई कांट फ्लाई मोर डेणा नहीं मुड़ी पारिबे नहीं दिस इज द रियलिटी मो इमेजिन करि परिबे आई कैन इमेजिन करिवार असुविधा नहीं मु जदि राजा होते तुमको मंत्री करती इमेजिन कर जहाँ को जहाँ भाविबारे मना नहीं जड़े भाभी पारे भावनार कौन तार सीमा नहीं तो से भाई आम कहीपर रियल सिचुएशन I have no wings. I cannot fly. Imagine, I can imagine. I can imagine. मु imagine करिबी मु भाबी परिबी कल्पना करि परिबी I can imagine if I had wings I could fly I would fly, I could fly, I might fly. एटा में देखो जे भावना मूलक कल्पना मूलक कहीं कह जाए था बिकॉज द रियल सिचुएशन एंड द इमेजिनरी सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस मु राजा नुहे आई एम नॉट ए किंग आई कांट मेक यू माय मिनिस्टर किंतु भाभी पारि ठीक से बळे तो सेति पई ताको हमें कहि थांती अनरियल सिचुएशन बा हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहाँ कि गोटे हाइपोथेसिस ऊपर पर्यवेसित हाइपोथेसिस ऊपर एटा होची पर्यवेसित देन कम टू टाइप 3 विषय हमें आगुरी संक्षेप रे हमें आलोचना करछोंदी टाइप 3 ताको हमें कहउछंती unfulfilled or impossible condition unfulfilled or impossible condition unfulfilled or impossible condition जाको हम उड़िया रे कहि परिबा असंभव बा पूरण होई नथिबा शर्त
अपूरणीय शर्त दिस टाइप ऑफ condition is used, this type of condition is used to imagine a situation after it is over, after the matter is over, after the matter is over, after the incident is over, ए घटना सरिबा परे आमे भाबू दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज यूज्ड ए बोली शर्त असंभव शर्त आमे भाबू घटना घटी सरला परे we imagine the opposite जहा घटी थाए तार विपरीत आमे भाबू एग्जाम्पल नेले भलो क्लियर हबो विपरीत कौन भाबू इफ ही हैड studied mindfully he could have scored more marks. He could have scored S-C-O-R-E-D scored more marks. এই বাক্যটি লক্ষ্য কর এবে রেজল্ট বাহারিছি রেজল্ট বাহারা পরে পিলা ভাবুছি পিলার গার্ডিয়ান ভাবুছি সার ভাবুଛନ୍ତି পিলাটি যদি মাইন্ডফুলি পড়ি থান্তা মন দেই অধিক পরিশ্রম করি থান্তা হি কুড হ্যাভ would have might have scored more marks से अधिक नंबर रखी पारि थांता जदि पढ़ी थांता अधिक नंबर रखी थांता अधिक नंबर रखी थांता दिस सिचुएशन इज अनफुलफिल्ड फुलफिल हो पारि ना इम्पॉसिबल रिजल्ट ऑलरेडी बाहरी जाइए बाहरला परे से भाबुची कौन ही इमेजिन्स द ऑपोजिट कंडीशन ऑपोजिट सिचुएशन ऑपोजिट समथिंग दैट हैड बीन दैट इज कंप्लीटेड जा घटी जाइए सरी जाइए बा सरी जाइथिला तार विपरीत को से भाबुची वी इमेजिन द ऑपोजिट पढ़ी थांता रखी थांता Let's take another example. How would example हमें नबा वर्षा हुई नहीं डिसेंबर मास हो जाए फसल जमी रे फसल भल ही ना चाषी भावुची if it had rained if it had rained the farmers would have got bumper crops जदि भलो वर्षा ही थांता if it had rained well बा वर्षा ही थांता भलो वर्षा ही थांता farmers would have got bumper crops वर्षा ही नहीं मरुड़ ही जाइए ए सिचुएशन टाको से कहूँ आफ्टर द मैटर इज ओवर मैटर सरीगला पर से कहूँ तेणु से आम कही था अनफुलफिल्ड और इम्पॉसिबल कंडीशन तार ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखा इफ क्लोज पास्ट परफेक्ट इफ क्लोज पास्ट परफेक्ट
main clause would have might have plus MV PP would have could have might have plus MV PP घटिबा परे past perfect we know the structure past perfect head plus MV PP head plus MV PP you see in this sentence if he had studied in this sentence if it had rained epotre would have could have might have plus MV PP he could have scored more marks farmers would have got bumper crops we can write this sentence without using if व्यवहार न करी मध्य वाक्य में लिखि परिबा if he had driven carefully he would have reached safely से सेफली पहुंची पारि था निरापद रे पहुंची पारि था जदि से गाड़ी चलई था ठीक रे ताहले जे आमे देखुछु सार कोनसी एक्सीडेंट हेची बा अन्य किछि असुविधा हेची तो आम से दृष्टि आम कहते इफ ही हैड ड्रिवन केयरफुली जदि से गाड़ी ठीक रे चलई था जत्न भाव चलई था से निरापद रे पहुंचता इन दिस सेंटेंस वी हैव यूज्ड इफ आम एठी मध्ये इफ देखुछंती तो ए सब वाक्य आम इफ लिखिबा नाही वी कैन स्टार्ट दिस सेंटेंस फ्रॉम हैड ही ड्रिवन केयरफुली मेन क्लोज जहाँ अच्छे से रहिबो ही वुड हैव रीच्ड सेफली इफ क्लोज रो हमें इफ न लिखी वी कैन स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम हेड इफ न लिखी हमें हेड रो आरंभ करि परिबा इफ इट डिड रेंड हेडेड रेंड मध्ये हम लिखि परिबा मेन क्लोज रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही जहाँ अच्छे से रहिबो हमें एई भली हमें स्टार्ट करि परिबा दिस इज आल्सो अनदर स्ट्रक्चर suppose in examination you find this type of sentence you will be confused एथरे if नाही पैराग्राफ दे जाइथिबो सेतरे करेक्शन करिया पई कहिथिबो 10 टी करेक्शन आसीबो find out the errors and correct it you find a passage do as directed नो do as directed सिस्टम नाही पाखा पाखी 10 वर्ष हबो काउंसिल व्यवहार करछि सिस्टम न्यू सिस्टम देयर इज ए पैसेज यू हैव टू फाइंड आउट 10 एरर्स एंड करेक्ट इट योरसेल्फ सही वाक्य रे भूल बाहर करिवो करेक्शन करिवो यू फाइंड हेड ही ड्रिवन गुडे वाक्य अछि हेड ही ड्रिवन केयरफुली एथरे इफ नाही अरे इफ तो नाही एठी एटा इफ क्लोज रे अछि की यस दिस सेंटेंस इज इन इफ कंडीशन इफ क्लोज कंडीशनल क्लोज तो सेथि पई हमें इफ न लिखि मतलब लिख परिबा हेड इट ड्रिवन केयरफुली तो हमें देखिबा जे हमें कहीं के को इम्पॉसिबल कंडीशन हमें इम्पॉसिबल कंडीशन बोले हमें कहीं के कहउछंती अनफुलफिल्ड बोले कहीं के कहउछंती रियल सिचुएशन वास्तव अवस्था वास्तव घटना कौन ही डिडंट स्टडी माइंडफुली he scored less marks
less percentage of marks. He got second class. He failed in the examination. This is the real situation. As I have told you, जहाँ घटी थिबो आमे तार विपरीत कथा में चिंता करिबा. We think or imagine the opposite. We think or imagine the opposite. आमे तार विपरीत कथा में भाबिबा. पाठ मन दे पढ़ी नथिला परीक्षा रे कम नंबर रखिला तार उल्टा पाठ मन दे पढ़ी था जदि थांता जदि पाठ भल भाव रे मन दे पढ़ी थांता ताले से परीक्षा रे बेसी नंबर रखि थांता. तो आमे सेटा को कंडीशनल करिबा. If he had studied, if he had studied mindfully, he would have scored more marks. This is the comment or imagine comment. गाड़ी जोर चला दुर्घटनार शिकार है. मु डेरी रे बाहरिली ट्रेन पाइली नहीं छता नहीं नथिला वर्षा रे उदा हला. तो ये सब घटना हला परे वी गिव सम कमेंट. आमे किछि आलोचना करंती आमे किछि कमेंट दियंती आमे किछि मंतव्य दियंती आमे तार उल्टाटा को कहंती. वी ऑलवेज वी कमेंट द ऑपोजिट. छता नहीं उदा ही न था भल पढ़ी बेसी नंबर रखी था जत्न भाव रे गाड़ी चलाई दुर्घटनार शिकार ही न था शीघ्र बाहरी ट्रेन पाई था. सो दिस इज द कमेंट. इफ ही हैड स्टडीड माइंडफुली he could have scored more marks. There are some deviations. ये जो हमें देखे लो these are the general rules. But you see in English there are unlimited rules and regulations. You can take any example article, verb pattern, then your modal, you can say reported speech. सबुथ तुम देख कि किसी व्यतिक्रम रोच. तो से व्यतिक्रम अनुजाई तार किसी नुआ रूल ता सहित आसूची तो सेगुड़ी तो रही किंतु हाराहारी आम एतिक रूल देखुचु. तापर आम आसवा वी कम टू अनलेस. अनलेस UNLESS अनलेस. Unless means if not. Unless means if not. Jodi nuhe. That means if condition in negative case. Take an example, then you can understand it. If you study mindfully, you will get first class. नेगेटिव करिबा आमे नेगेटिव करिबा उभय पट को आमे नेगेटिव करिबा. इफ क्लोज एपट रहउछि ताको भी नेगेटिव करिबा. इफ you do not study, if you do not study mindfully, you won't get first class. If you don't study mindfully, you won't get first class. Then use unless. एटा में नेगेटिव कर देले तापर unless एटा में unless व्यवहार करला.
unless you study mindfully, you won't get first class. You won't get first class unless you study. See, unless, if you do not study mindfully. এইটি আমি এই বাক্যরে ইফ লাগিছি প্রথম বাক্যরে আমি তাকে শর্ত রয়েছে, সেই শর্ত দিয়ে যাইছে যদি ন পড়ো মন দেই ন পড়ো ফার্স্ট ক্লাস পাইব নাই, সে একা মিনিং unless you study mindfully you won't get first class. तो यार मीनिंग ये दीटा वाक्यर मीनिंग सेम मीनिंग इफ क्लोज रो नेगेटिव रे. तो यार मध्य एक्टिविटी तुम्हें इन योर बुक नंबर 4 you find there are different activities भितर मुटिके I will give you a little hint about the activities. In activity 1 you find there are sentences. One side is there, you have to complete another side. One side if clause is there, you have to complete main clause. Main clause is there, you have to complete the sentence by using if clause. Activity 1. Activity 2, that is based on common superstitions. Activity 2, common superstitions. If you hear an owl hooting at night, a friend will die. You have to write some other sentences based on common superstitions. Another example, if your left hand begins to itch, you will give money away. If you see a cat on the road, you will face a problem. This is type 1 condition, that is not type 0. There is no discussion about type 0 in your books. Then activity 3, that is also type 1. If I work hard, I will get good marks. If I get good marks, I will go to a good college. Then in activity 4, you see in activity 4, that is unreal, hypothetical, imaginary situation. If I became a cloud, I would float in the sky. If I could go back to the past, I would enjoy my childhood days. If I were a rat, I would live in a hole, actually hole. These type of sentences are there. Activity 6, similar sentence. In activity 7, you find a real situation. I didn't study, so I didn't do very well in the examination. Comment. If you had studied, you would have done better. So you have to do similar type of sentences. That there are 8 sentences. Then the last one is unless, if not. Farahari ame conditionals ro ei bholi vakya ame alochona karchonti. You can solve these questions, and I think if you find any problem, then you can contact your Nagen bhai, and I will try to solve your problem. Thank you.